सब प्रैक्टिस कर ली है और कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू, गुड हो गया। Let's move forward to the last topic of P3, which is complex numbers. Okay, complex numbers. There are some numbers अभी तक तो आपने पढ़े, you have studied only about the real numbers. So what are non-real numbers? Non-real numbers are those numbers in which under the root you have negative number. Mean if you get under root -1, under root -2, under root -7, under root -16, these all are non-real number. Other than these, बाकी सब क्या है वो real हैं. Real number पहले लिखते हैं आप कौन से? 3 is a real number, 4 is a real number, -8 is a real number, 0 is a real number, 3/5 is a real number, -2/7 is a real number, 5/11 is a real number, under root 2, under root 3, under root 7, pi. These all are real number. ये मैंने जो लिखे, these all are real. So नॉन रियल कौन से हैं जिसमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है, उसको हम नॉन रियल नंबर कहते हैं. And basically the mixture of real and non real, रियल को और नॉन रियल को मिक्स कर दें तो एक अजीब सा नंबर बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. Square root of -4, this is a complex number. Here 3 is the real number, under root -4 is a non-real number, so overall we will call that a complex number. So we are going to study about these type of numbers, complex numbers. ठीक हो गया? Okay, सबसे पहले तो complex number में अगर मैं सिर्फ non-real की बात करूं, if I have under root -4, okay, before that there is a notation for complex number. Mean under root -1 को हम लिखते हैं, it is iota. This is iota. We will call this as iota. Under root -1 किसके इक्वल होता है? iota के इक्वल. So if under root -1 is iota, if I write here under root -4, then how can you write this number in terms of iota? Can you write this number in terms of iota? हम इसको यूं लिख सकते हैं, अंडर रूट -4 कैन बी रिटन एज 4 times -1, लिख सकते हैं. Further I can break into under root 4 into under root -1. What is under root 4? 2. What is under root -1? Iota. So it means under root -4 is 2 iota. ठीक हो गया? ओके, अगर हमारे पास हो अंडर रूट -9, सो मुझे डायरेक्ट बताइए क्या होगा? It will be 3 iota. I mean अगर ब्रेक करके लिखेंगे अंडर रूट 9 into under root -1, under root 9 is 3. So this under root -9 is basically 3 iota. ठीक हो गया? Then how to write under root -2? under root 2 तो under root 2 ही रहेगा. And what is under root -1? It is iota. So it is under root 2 iota. कोई exact integer नहीं आएगा इसके साथ. So it is under root 2 iota.
एक ही बात है। Under root minus 7. How to write this in terms of iota? Isra, Zishan. Under root 7 into -1. Yes, under root 7 into under root minus 1. I know under root minus 1 is iota, so it means we can get under root 7 iota. What if we have under root minus 25, Mr. Ali? 5 iota होगा। Yes, ये 5 iota होगा। तो बताने का पर्पज ये कि अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा करूंगा, सो आई होप आप समझ आया करेंगे। ओके, नाउ यूज दिस थिंग हियर अगेन। मीन वी नो कि अंडर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा, और वी कैन से कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1. If I take square on both sides, if I take square on both sides, तो लेफ्ट पे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, राइट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यू विल बी लेफ्ट विद ओनली -1. So if iota is equal to under root -1, it means iota square is -1. So iota square -1 है, ये हमें पता चल गया है। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज किया करूंगा, क्योंकि हमें पता है ना आयोटा अंडर रूट -1 का मतलब आयोटा स्क्वायर -1 होगा। सो कैन यू टेल मी कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ iota 3 iota square? What will be the answer of 3 iota square? -3, no doubt. Mean 3 iota square is -1. So answer is -3. Can you tell me the answer of iota raised to power 4? Yes, it is. Iota 4 को we can write iota square raised to power 2. What is iota square? It is -1, and -1 का square is +1. What's the answer of iota raised to power 6? -1. देखिए हमें स्क्वायर पता है, तो हम इसको आयोटा 6 को लिखते हैं आयोटा स्क्वायर रेज्ड पर व्हाट? 4. रियली? 3. डबल पावर मल्टीप्लाई होती है, so 2 times 3 will make it 6. So iota square -1. And what's the cube of -1? देखिए 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, लेकिन नेगेटिव की पावर अगर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव आता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे ही है अमर। So it is -1. So iota raised to power 100. Yes. Iota raised to power 100 का आंसर सब अपना अपना सोच के रखें। Yes, Hasi, what's the answer of iota 100? 1, sir. बिल्कुल, हसीब के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हसीब ने क्या किया, आयोटा स्क्वायर रेज्ड टू पावर 50, आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 रेज्ड टू पावर 50 माइनस नेगेटिव की पावर इवन, तो वही बात बचपन से हम करते आ रहे हैं कि पावर पॉजिटिव हो जाती है अगर नेगेटिव हो। फिर हमारे एक दूसरे सीख रहे होते थे कि नेगेटिव पावर आंसर पॉजिटिव, ऐसे ही है ना, याद है आप लोगों को तो यार। अच्छा, अब बताइए व्हाट्स द आंसर ऑफ आयोटा क्यूब? माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब तो आयोटा स्क्वायर, और मेरी ना क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। सो हम यूं तो सकते हैं ना, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर बोले तो -1, so -1 into iota is minus iota. So this time your answer is in terms of iota, right?
Then what is iota raised to power 5? पिछले की बात कर रहे हैं, ये आयोटा स्क्वायर था ना, तो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आ गया, तो ये आयोटा है, मैंने लिख दिया। नहीं नहीं, आयोटा होता है अंडर रूट -1, एक बार माइनस आएगा, एक अंडर रूट के अंदर माइनस, वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसी तरह ही रहेगा। सो व्हाट इज आयोटा 5? आयोटा 4 इंटू आयोटा, आयोटा 4 को तो हम लिख सकते हैं ना आयोटा स्क्वायर स्क्वायर। एंड व्हाट इज आयोटा स्क्वायर स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 का स्क्वायर इज +1, +1 into iota is positive iota, right? So last बताइए, what is iota raised to power 21? Yes, Minhal. सर जी Minhal, are you there? इसका जी भी please. इसका भी iota होगा, बिल्कुल सही है। Iota 21 is basically iota 20 raised to power iota. Iota 20 is iota square raised to power 10, or iota square -1. -1 raised to power 10 is +1. So +1 into iota is just iota. इससे ज्यादा स्लो मोशन चलाऊं? Okay, next. If I have, normally हम complex numbers को z से represent करते हैं. If I write a complex number, z is equal to 2 plus under root -9. Is this a complex number? Yes, 2 is real and under root minus आपके पास क्या है, non real. तो मुझे इसको iota की फॉर्म में बताइए क्या बनेगा? This is 2 plus under root 9 is basically 3 and under root -1 is iota. So this is z is equal to 2 plus 3 iota. And in general, if we have z is equal to a plus b iota or x plus y iota, then this a is called the real part of the complex number and this b is called imaginary. मीन जो रियल नहीं होता उसको नॉन रियल के हैं या इमेजिनरी कहते हैं. This is called imaginary part of the complex number. So in the above example, z is equal to 2 plus 3 iota. 2 is the real part and 3 is the imaginary part. Right? We can represent the complex numbers in a diagram. जिस तरह हम कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई को प्लॉट करते हैं. If you want to plot this complex number on a diagram जिसमें x axis और y axis होता है, that diagram is called Argand diagram. This diagram is called Argand diagram. Argand diagram is a diagram which is used to represent the complex numbers. जिस कोऑर्डिनेट्स को आप शो करते हैं, इस तरह आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में. इसी तरह जो डायग्राम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करती है उस डायग्राम का नाम है आर्जेंट डायग्राम.
Now what is that Argand diagram? This horizontal axis, instead of x-axis, this is called the real axis, and the vertical axis is called imaginary axis. देखते जाए, समझ आ जाएगा फौरन से. Real axis and imaginary axis. So पहले x एक्सिस होता था और y एक्सिस, अब उसको हम रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं. अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, which is say 2 plus 3 iota. So real part is 2 and imaginary part is 3. So where is 2 plus 3 iota? This is the point which is showing x coordinate 2, real coordinate 2 and imaginary coordinate 3. So this is z1. Or the which is -3 minus 4 iota. Z is minus ये किसको मसला है, इसको या नेट? वालेकुम अस्सलाम. So Z2 is -3 minus 4 iota. Where is -3 minus 4 iota? आप इसको प्लॉट कर दें. -3 minus 4 देखिए कहां पे है. x -3 y -4 इसमें नहीं है, उनको बता रहा. So this is Z2. एक और चेक कर लेते हैं. If you want to plot Z3, which is if I tell you के 4 minus 2 iota. So real part is 4, imaginary part is -2. So 4 minus 2 is this point. So this is Z3. So I hope ये मुश्किल बात नहीं है. ये हम नॉर्मल क्योंकि x y कोऑर्डिनेट को लेवल करते आ रहे हैं, तो सिर्फ चेंज क्या आया कि नाउ योर x एक्सिस योर रियल एक्सिस एंड y एक्सिस योर इमेजिनरी एक्सिस. सो इसी को हम, इस डायग्राम को हम कहते हैं आर्जेंट डायग्राम. ठीक है, आगे चलें. Okay, next. If I tell you that is complex number z is x plus y iota या iota y एक ही बात है. Real part is x and imaginary part is y. कुछ छोटे छोटे concepts. First one. Modulus of complex number. क्या होता है? मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं z बार,
This is equal to under root x square plus y square. If I tell you कि ये एक आपके पास आर्जियन डायग्राम है, उसमें ये एक पॉइंट है x z. So what does modulus of z mean? आप कैलकुलेट कर लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मीन x आप पुट करेंगे, x की वैल्यू y, उसका स्क्वायर लेंगे, ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे. लेकिन जो आंसर आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? That represents the distance of that complex number from origin. Length, बिल्कुल सही कह रहे हैं. So वो लेंथ रिप्रेजेंट, ये जो है इसको मॉडुलस ऑफ z कहते हैं. The distance of that complex number from origin. Next, argument of z. नाम नए हैं, काम वही है. Argument of z is theta is equal to, इसको लिखते हैं argument of z is equal to theta is equal to tan inverse y over x. What is argument of z? Argument of z नाम नया है, लेकिन ये एक एंगल है. जब आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करते हैं, तो द एंगल मेड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, this one is called the argument of z, mean theta. This is called the argument of z. Mean जब आप argument of z कैलकुलेट कर रहे हैं, theta is equal to tan inverse y over x, तो आपको पता होना चाहिए कि you are actually calculating the angle between the x axis and the line joining the complex number with the origin. वो वाला एंगल आपको शो करता है. और ये एंगल फाइंड कैसे करते हैं? ये भी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू करते हैं. आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री में आप सिंपली tan इनवर्स y ओवर x करते हैं, तो n इनवर्स करते हुए बेसिक एंगल पहले फाइंड करते हैं. बहरहाल इसको मैं अलग एग्जांपल से बताऊंगा. अभी नेक्स्ट एक और चीज देखते हैं. Conjugate of the conjugate of a complex number. कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी आप देखेंगे z स्टेरिक से रिप्रेजेंट करेगा, कभी z बार उसके ऊपर भी आएगा, मीन उसको ऐसे भी कर सकते हैं, और z स्टेरिक भी हो सकता है. बट ये है क्या? So conjugate of z is basically x minus y iota. That's it. अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना हो, देखिए क्या चेंज आ रहा है, किसका साइन चेंज हो रहा है? इमेजिनरी पार्ट का. So just change the sign of imaginary part, you will get the conjugate. अगर 3 plus 2 iota है, तो conjugate क्या होगा? 3 minus 2 iota. If you have z is equal to minus 3 plus 5 iota, what is the conjugate of this? Minus 3 minus 5 iota. Only you have to change the sign of imaginary part. Okay.
कुछ आगे करते हैं एग्जांपल इसकी। ये कॉन्जुगेट बेसिक क्या होता है? साइन तो चेंज कर दिया, ये होता क्या है ग्राफिकली, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? Z and Z bar, Z and the conjugate of Z are the reflection of each other over x-axis. Are they? आप देखिए ना कि 2 + 3 आयोटा ये नंबर है, तो 2 - 3 आयोटा बिल्कुल वो नीचे आ जाएगा, सिर्फ दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं ओवर द x-axis. ओके, नेक्स्ट इज के एग्जांपल अगर मैं कुछ लिखूं कि इफ वी हैव Z = 3 - 7 आयोटा, तो इसका कैलकुलेट करें प्लीज मॉडुलस. सो मॉडुलस ऑफ Z करें अगर, तो Z मॉडुलस इज √3² - 7². क्या आंसर आता है? सॉरी, √58. √58 is the exact number, or we can write 7 points. What's the argument of Z? Mean argument of Z कैलकुलेट करना है एंगल. जी आप जरा देखिएगा प्लीज. आर्गुमेंट ऑफ Z, चले आप पहले कैलकुलेट करें. जी पहले आप क्या करें, आर्गुमेंट ऑफ Z फाइंड करने के लिए argument of Z is equal to, we know, tan inverse y by x. Y -7 x3, but हम लेंगे +7 +3, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक एंगल आप फाइंड करते थे कैसे? नेगेटिव को इग्नोर करके. सो यू हैव टू इग्नोर द नेगेटिव. व्हाट इज दैट? 66.8. बट ये आंसर नहीं है. अब आप देखिए कि किस क्वाड्रेंट में है ये. आप देखिए कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर. लुक एट दिस C. +3 -7 iota. +3 -7 iota means somewhere here. Am I right? It's in third quadrant. So third quadrant में आपका इसका मतलब third quadrant mean ये होगा 180 plus basic angle. So what is 180 plus basic angle? 246.8 is the argument of C. Just like trigonometry में second quadrant 180 minus basic angle, third quadrant 180 minus basic angle, third quadrant 180 plus basic angle, fourth 360 minus basic angle. तो ये उस रूल को यूज करें. अगर कोई यू लिखना चाहता है एंगल, ये वाला लिखना चाहता है, नेगेटिव क्लॉकवाइज लिखना चाहता है, तो वो नेगेटिव होगा. तो ये अगर आप इसका लिखना चाहें तो क्या होगा ये एंगल? दिस विल बी, वैसे तो नहीं माइनस में आएगा बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये क्या है? कैसी कैसी बातें कहां से लाते हैं उस. नहीं जी, ये यही अगर एंगल बताना हो तो आप 360 में से 246.8 माइनस करें. 130 113.62 113.62. ये एंगल 113.2 है. आप इसका आंसर यूं भी लिख सकते हैं -113.2.
और माइनस क्यों? क्योंकि वो तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव है। लेकिन बेस्ट वही है जो पहले आपने लिखा, मीन वो जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट है तो 180 प्लस बेसिक एंगल। अली मुझे कैसे पता चला कि थर्ड क्वाड्रेंट में था? सर वो -7 आया। -7 से सिर्फ पता चला। हसीब बताइए। Sir, tan is negative in the third quadrant. नो नो नो, ये रीजन नहीं है। 10 तो खैर पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे और रीजन है। हमें कैसे पता चला कि थर्ड क्वाड्रेंट है रायान? सर 3 और -7 जो शुरू में है मैंने वो गलत coordinates। प्लॉट किया हुआ है और किसी ने कुछ नहीं ऑब्जर्व किया इस बात को कि मैंने क्वाड्रेंट ही गलत प्लॉट किया हुआ है और किसी ने। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 7 आयोटा क्या थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है? आई एम सॉरी कि मैंने मिस्टेक की, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस मुझे हुआ कि आप में से किसी को नहीं पता चला। वैसे तो मिस्टेक्स छोड़ते नहीं है मेरी आप। जी देखिए, v इज +3 -7, तो ये +3 यहाँ पे कहीं होगा, +3 -7 इधर कहीं होता है। सो इट मीन दिस v इज हियर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो हियर इज v। सो दिस इज v। अगर ये v है तो आपका तो एंगल बनता है 360 माइनस बेसिक एंगल। अब आप बताइए ये आंसर क्या बन रहा है? व्हाट इज 360 माइनस 66.8? 293.2। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? 360 माइनस बेसिक एंगल, सो 360 माइनस 66.8। और अगर कोई आंसर इस तरह बताना चाहता है, यूं ऐसे बताना चाहते हैं, तो आप इसको क्या लिखते हैं? -66.8 डिग्री। जी क्लियर? आप 360 में से 293.2 माइनस कर दे, 66.8 आया। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव एंगल होते हैं। जी आई होप क्लियर है ये। नाउ फाइंड द आर्गुमेंट हो गया, मॉडुलस हो गया, एक फाइंड कर लें आप। कॉन्जुगेट ऑफ z। सो कॉन्जुगेट ऑफ z को आप z बार से, z स्टेरिक से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ z हियर? 3 + 7 आयोटा। अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो 7.62 आता है मॉडुलस ऑफ z, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी लेंथ? और का ये रेड कलर वाली, रेड कलर नहीं, पिंक कलर वाली लेंथ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिस वन। एंगल को हर दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे हमें नेगेटिव था। एंड व्हाट इज द कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन। अगर ये 3 - 7 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट इज 3 + 7 आयोटा हियर। दिस इज द स्टेरिक, राइट? तो जितनी ये बातें आज की हैं प्लीज इनको याद रखिएगा। कल काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।